the judges in a moot court competition don't go after deciding a case like a judge in a real court. The real judges give a verdict in favor of one party or the other. That is in the form of deciding a case in one party's favor. But in moot court competitions, these are the skills which have to be judged, and we judge them on the basis of the weightage we give to different parts or segments. Like a number like 25% marks out of 100 for preparation of the memorial, 25 marks maybe for presentation skills, 25 marks maybe how well you responded to the judges' questions, and how was the coordination between the two teams, what was the mannerism used in the court, how you took care of the court ethics. And then do your own research, because you are a student, you have that time and ability to do the research now. If you become a professional, तो फिर you will wait कि जब तक आपके पास client नहीं केस लेके आएगा आप research नहीं करोगे. इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 से 10 घंटे हर हफ्ते के you should allocate for your research. तो इस practice को अगर आप आज adopt कर लेंगे as a student, it will make your life easier as a practitioner. तो आप अगर आपको case law कोई नहीं मिल पा रहा या आपको traditional method से नहीं सीखना, तो आप conventional की बजाय unconventional method adopt कर लो. Try to find a case law from media, from YouTube, from any other source. Create a fact scenario for yourself and then do the research. की स्किल जो मैंने सीखी है वो तो मैं समझता हूँ कि persuade आप सबसे ज्यादा तब कर सकते हो जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओ या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जज के पहुंच जाओ जहां पर आप उसको कर सकते हो. और उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने का जो रूट है वो ह्यूमिलिटी, प्रेपरेशन एंड अ लॉट ऑफ सबमिशन. उसके बगैर आप वहां नहीं पहुंच सकते. अगर आप मुझे भी ये सवाल करो, ऐसे यही जो आपने सवाल किया, आपको यार बात सुनो, मैंने तो ऐसे पढ़ा है, तुमने कैसे पढ़ा है, तो मेरा तो शायद हो सकता है आपको जवाब देने का दिल भी ना हो, लेकिन आपने इतनी इज्जत से उसको ड्राफ्ट किया और आपने कहा कि सर आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये किया, सडनली यू बिकम रिसिपिएंट और यू बिकम रिसेप्टिव टू द अदर पर्सन. तो आप कहते हो यार इसके सवाल में जो डेप्थ है मैं उसको जवाब देता हूँ.